This is Vlogpril Day 21. Hey, what's up guys, सबको स्वागत है मुझे फन में। तो फिर आज है बुक रिव्यूइंग कोड पैटर्न प्रोग्रामिंग बुक बाय आर नागेश्वर राव। हैप्पी जिस बंदे ने भी मुझे कमेंट किया था कि ये बुक एन नागेश्वर राव नहीं आर नागेश्वर राव है, आई एम सो सॉरी। मैंने गलती से वहां पर एन नागेश्वर राव बोला था, यूट्यूब ने मुझे चांस नहीं दिया कि मैं वहां पर डाल पाऊँ आर नागेश्वर राव। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मुझे लिटरली कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि एन नागेश्वर राव नहीं है, आर नागेश्वर राव है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आई एम कंफर्मिंग इट, डॉक्टर आर नागेश्वर राव जी। ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से ये बुक मैं इसलिए रिव्यू कर रहा हूँ बिकॉज दिस बुक को मैंने जस्टिस नहीं की थी एंड मैंने अपना पुराना वीडियो देखा था एंड ठीक से नहीं देखी। आई रियली सो मेनी व्यूज, सो मुझे लगा कि ओके पीपल डू रियली वांट दिस बुक रिव्यू करेक्टली। सो मैं ये वापस बना रहा हूँ बुक बिकॉज मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया था एंड इट हैज बीन ईयर एंड सम मंथ्स एंड I do have some suggestions for this book too because इस टाइम में मैंने ये बुक वापस पढ़ी थी while doing some programs too. Okay, so let's get started. Okay, so where do I start? First of all, this book is pretty great. I really like this book. This book is one of my favorite Python programming books because this book does explain concepts pretty clear, but I do have something that I want to say. This book, now after learning Python even for longer time, is not for someone who is above intermediate plus. Intermediate plus is kind of a level जब आपने basics सब सीख लिए होंगे, basics of Python which include मुझे भी ठीक से नहीं बोल पाऊंगा but basics बोल देता हूँ, like how does basic of Python work, how does compilers intercept interpreters work, data types, strings, string concatenation, input output, print functions, and also it includes some few modules like time, and this is my own Python basics, यानी क्या होना चाहिए इसमें कुछ चीजें ज्यादा एडवांस भी लग सकते हैं। एंड इंटरमीडिएट में आ जाएंगे तो मेरे थोड़े से अपर हैंड ऑफ मॉड्यूल्स also comes बेसिक्स में if else all the true or false statements भी इंक्लूड हो जाएंगे, bit of functions too. Intermediate में I usually say oops too because oops I will say it's an intermediate thing to learn, and a few more modules such as TK Inter, not advanced TK Inter because TK Inter is a lot useful, also Turtle and a bit of using वेब स्क्रैपिंग अ लिटिल बिट, नॉट टू मच. इंटरमीडिएट प्लस में आ जाएंगे तुम्हारे अ बिट ऑफ टेंसर फ्लो का स्टार्टिंग, नॉट एडवांस बट बेसिक टेंसर फ्लो, डेटा साइंस. मैंने एक शर्ट सीधी पहनी है ना या एंड दी बेस्ट टीके इंटर एंड रियली गुड एट वेब स्क्रैपिंग, डेकोरेटर्स एंड वन मोर थिंग आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट्स वर्ड, अगर याद आ गया एडिटिंग के टाइम तो रख दूंगा मैं स्क्रीन पे. एंड एडवांस यानी फुल टेंसर फ्लो अगर आप डेटा साइंस के साइड जा रहे हैं. माई एसक्यूएल ऑल्सो, नो एसक्यूएल्स ऑल्सो, माई एसक्यूएल एंड नॉन एसक्यूएल्स ऑल्सो वेब स्क्रैपिंग अच्छी तरह आनी चाहिए. एंड इतना ही नहीं, एडवांस्ड में डेटाबेस कनेक्टिविटी भी अच्छी तरह समझना चाहिए, नेटवर्किंग भी अच्छी तरह आनी चाहिए एंड डेटा साइंस भी अच्छी तरह आनी चाहिए एंड इस पे मोर फोकस होना चाहिए. एंड एडवांस्ड पाइथन इज काइंड ऑफ डिफरेंट बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रीम तुम्हें बदल जाएगा एडवांस पाइथन क्या होएगा. बिकॉज इफ यू हैव नथिंग टू डू विद ऐप डेवलपमेंट, लर्निंग टीके इंटर वुडंट बी सो ग्रेट, बट इफ यू आर मोर इनटू डेटाबेस देन if you are more into app making, TK Inter will be a really core part. And if you are more into managing databases or adding your device, मैं ज़्यादा अंग्रेजी में बोल रहा हूँ यार, आज पता नहीं क्या हुआ मुझे आज. अगर आप डेटाबेस से ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, लाइक ट्राइंग टू क्रिएट अ स्मार्ट हाउस एंड यू आर मैनेजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, देन यू विल बी required to get really good at database connectivity and that kind of stream. So this is kind of my division of beginner, advanced, intermediate, advanced and professional. मैं advanced में हूँ, I will say that. मुझे टेस्ट लेना पड़ेगा उसके लिए वापस. यू नो व्हाट, एक्चुअली एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मैं पाइथन का पीकअप टेस्ट लेना चाहता हूँ बट इट्स रियली कॉस्टली. इट्स अराउंड 20,000.
I need to double check that, but I cannot pay that much of money to take a test at this age, because अगर मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ था and I was actually looking for jobs, I would have 100% taken that test, because I actually need to say that I know Python. But abhi I don't think so I need that, because I don't need that literally. Okay, now आते हैं इस बुक के बारे में. अभी तक मैंने जो भी बोला ये बुक के बताने के लिए ही है. सो इस बुक में सबसे पहले मैं बोलूंगा दिस बुक इज काइंड ऑफ फॉर बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट, बट बिगिनर्स के लिए मैं 100% सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज सम स्टफ इन दिस बुक आई डू नॉट लाइक. पहले की कुछ चैप्टर्स आर नॉट वेल एक्सप्लेन्ड फॉर इन पर्सपेक्टिव ऑफ अ बिगिनर. मैंने लास्ट टाइम भी ये बुक रिव्यू की थी, आई सेड द सेम थिंग, बिकॉज इस बुक में कुछ चीजें थोड़े से कॉम्प्लेक्स किए गए हैं जबकि जरूरत नहीं है. ऑलवेज मैं हमेशा यही मानता हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट करते वक्त अगर आप कोई भी चीज सीखते हो सो इट्स अ लॉट इजियर. सो अगर आप कोई भी कोर्सेज सोच लीजिए गूगल में, आई मीन यूट्यूब में और कहीं पर भी, यूडमी का अंजलि यू कोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल. उसमें क्या है, इट्स नॉट 100% ऑन थियरी. फर्स्ट वो तुम्हें बताता है बेसिक ऑफ प्रैक्टिकल्स क्या है. अगर आप ये बुक लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये बुक मोस्टली थियरी बेस्ड है. Even though this book is pretty great and theory is really important, ये तभी काम आएगी आपको mainly अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपने own. This book is not project based, which is one of its most important flaw and I don't like it at all. प्रोजेक्ट बेस्ड बुक्स वो होते हैं जो स्पेसिफिकली तुम्हें सब चीज एक प्रोजेक्ट के अंदर घुमा के सिखाते हैं, वेदर इट बी अ बेसिक फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, अब बेसिक प्रिंट स्टेटमेंट भी एक प्रोजेक्ट में डाला, फन प्रोजेक्ट में डाला, तो इट बिकम्स अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग. सो इसमें ये नहीं है, सो आई डू नॉट लाइक दैट. एंड इंट्रोडक्शन टू पाइथन का चैप्टर इज कम्प्लीटली स्किपेबल, बिकॉज नन ऑफ दैट इज रियली, ये फर्स्ट चैप्टर इसका इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, दैट इज नॉट 100% not compulsory to learn at beginner or even at intermediate stage. You don't need to learn what is bytecodes in Python or how does it work completely. Second, writing our first Python program is the chapter 2. That I don't have a lot of problem yet. It's fine. It doesn't has a problem. इसमें matplotlib, XLRD, pandas, numpy नाम के मॉड्यूल्स भी इंस्टॉल करवाना दिखाते हैं. Those are not really useful. So though so वो चीज़ें actually useful नहीं है beginner to intermediate stage पे. Then coming to the next chapters, data types in Python. No problem with that too, but project based होता तो ज़्यादा अच्छा होता. Next coming to operators, no problem with that too, but bitwise operators की I don't think so really ज़रूरत है. I mean I wouldn't say सीखना नहीं चाहिए. It's nice to know them, but yeah, input output no problems at all. मैं एक्चुअली सारे चैप्टर्स ठीक से बता रहा हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने ये नहीं बताया था एंड आई डोंट लाइक दैट. कंट्रोल स्टेटमेंट्स रियली इंपॉर्टेंट, रियली नाइस चैप्टर ऑल्सो. एरेस इन पाइथन need to work a little bit more on expansion and project based, because यहाँ से बुक थोड़ी सी बोरिंग होनी चाहती है. एंड प्रोग्रामिंग यू विल से बोरिंग है, बट इट्स नॉट एक्चुअली. अगर आप किसी भी चीज को प्रोजेक्ट्स में डाल देते हैं ना, इट्स रियली नॉट दैट मच बोरिंग. Strings and characters really important, really nice chapter. 2 functions really important. List and tuples भी होता है, which is really nice too. Dictionaries little bit small problem there, bit थोड़ा सा explanation अच्छी होनी चाहिए थी. Introduction to oops, not, I can't have a problem with that. Classes and objects, yes, that's kind of another thing to oops. So इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है oops से, because इंट्रोडक्शन टू oops में ज़्यादा oops के बारे में नहीं है. आई मीन लाइक जस्ट बेसिक्स है, ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें बताया जाता है. क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म इजी नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दैट. एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेरेंसेस, आई डोंट हैव प्रॉब्लम्स विद दैट टू. नाउ कमिंग टू एक्सेप्शंस के चैप्टर्स में मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फॉलो किए थे. बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए थे, बिकॉज वाइल यूजिंग द कोड गिवन देयर आई फाउंड आउट सो मेनी बग्स और प्रॉब्लम्स और एरर्स जिन्हें मैं फिक्स नहीं कर पाया. आई हैव नो आइडिया व्हाई. ये एक्सेप्शंस नाम की चीज़ हमेशा एक प्रॉब्लम ही रही थी मेरे साथ. मेरे लैपटॉप में कभी भी मैं एक्सेप्शंस के लिए कोड लिखता हूँ तो डजंट वर्क परफेक्टली. एक्सेप्शंस इज बेसिकली टेलिंग योर लैपटॉप इफ यू गेट अ एरर हाउ टू हैंडल इट, बिकॉज एवरी टाइम अगर आपको एरर आएगा सो इट कैन नॉट जस्ट ब्रेक डाउन, राइट.
सो एरर एक्सेप्शन इज ग्रेट वे टू गेट योर प्रॉब्लम्स की क्या प्रॉब्लम है एंड डू अकॉर्डिंगली. सो अगर आपको एक एरर आ जाता है सो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे एंड प्रॉबेबली ट्राई अ डिफरेंट वैल्यूज और ट्राई डिफरेंट स्ट्रिंग और ट्राई अ डिफरेंट मेथड. देन वी आर कमिंग टू रेगुलर एक्सप्रेशंस इन पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स. उससे भी प्रॉब्लम नहीं है. डेटा एंड टाइम नॉट अ यूजुअल. एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है थोड़ी सी. उसकी यूजेज ठीक से नहीं दिखाई गई है विच आई डू नॉट लाइक. उसमें सिर्फ थ्योरी बेस्ड है. एज आई एम टेलिंग इन दिस वीडियो आपको समझ जाना चाहिए कि दिस बुक इज कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड, not at all suggested for beginners. Intermediate, fine. Advanced, okay, fine, no problem. It can be useful to learn some difficult theories, I guess, but not suggested for beginners. ये book मैंने actually near पहले ठीक से review नहीं की थी, इसलिए I just really wanted to review this. Threads, I haven't read this chapter to be honest, because मुझे threads की जरूरत नहीं है, and yeah, I did not read this chapter. I am not going to give out false information, so yes. ग्राफिकल इंटरफेस, yes that is pretty nice, but एक प्रॉब्लम है. exe कन्वर्जेशन इज नॉट गुड. exe में कोई भी चीज कन्वर्ट करना पाइथन में कैन बी अ रियली हार्ड थिंग, बिकॉज exe में कन्वर्ट करते वक्त यू हैव जस्ट सो मेनी प्रॉब्लम्स, एटलीस्ट मेरे साथ. बिकॉज अगर आप डिफरेंट काइंड ऑफ लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं सो डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे जो इसमें नहीं दिए गए हैं, विच आई डू नॉट लाइक दैट. देन कमिंग टू नेटवर्किंग इन पाइथन. Nice, that's a nice chapter. Python's database connectivity, I don't know why, but इसमें भी मैंने बहुत सारे problems face किए थे. There were a lot of errors in the code. I cannot 100% say कि book का error है या मेरे laptop का error है. By the way, this book is, just give me 1 second. Okay, so I'm not 100% sure, but this is Python 3.6. I'm not 100% sure कि इसमें एक और एडिशन है या नहीं, बट Python 3.6 is not the latest version. Python 3.9 है and the 9 which I use, I'm telling you. अभी वापस जब आप ये वीडियो देख सकते हैं it could be changed drastically, who knows, it depends on the time you are watching this. But I do have a problem with that. There are some problems too, and MySQL में भी थोड़े से updates आए हैं and some bugs are also fixed in this time. Then we are coming to the last chapter, data science using Python. Not 100% good, I will not say that. इसमें मोस्टली बताया गया है कि लाइक डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, काइंड ऑफ डेटा कैसे कलेक्ट करना है एंड डेटा को मैनेज कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है. डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स दिखाए गए हैं, जैसे कि बार ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है, बिकॉज इट इज रियली यूजफुल व्हेन यू यूजुअली वर्क इन डेटा साइंस. इट्स लिटरली अ कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रीम. आई विल नॉट से दैट इट इज रियली ग्रेट. सो यहाँ तक तुम्हारी बुक खत्म हो जाती है एंड इट एंड्स एट इंटरमीडिएट प्लस अकॉर्डिंग टू मी. स्टार्ट ऑफ द इंटरमीडिएट प्लस, इट्स नॉट द कंप्लीट ऑफ इंटरमीडिएट प्लस. सो या इसलिए आई विल नॉट सजेस्ट दिस बुक. अगर आप या तो कंप्लीट बिगिनर है, यानी अगर आपको पता ही नहीं पाइथन क्या है या प्रोग्रामिंग फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नॉट सजेस्टेड. आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स देख लीजिए एंड आई एम ऑल्सो बी गोइंग टू स्टार्टिंग अ न्यू कोर्स ऑन यूट्यूब एंड माई ओन समथिंग सीक्रेट. सो आप वहाँ जा सकते हैं. और आई वुड रियली रिकमेंड Angela's use 100 days of Python bootcamp. She really explains really well. I did took this course to access its advanced parts because it was nice actually. And अगर आपको प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा नॉलेज है and आपको just you need a book to refresh your knowledge or just use as a kind of suggestions, then this book is suggested at those cases. But most of you guys who watch my videos, I'm just assuming according to based by YouTube analytics and my own analytics and मेरे जो comments आए थे, I think most of you are intermediate or basic. So I won't recommend you 100%. अगर you still feel कि अगर आपको Python आती है and you're not buying this book for its code but for its core, get it? Theory जो core, because it's the name of the book. So अगर आपको बुक खरीदनी है थ्योरी के लिए 100% सजेस्टेड, प्रैक्टिकल के लिए नॉट सजेस्टेड. सो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ. आई जस्ट टोल्ड 100 बार बोलूंगा क्या मैं. ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना है तो मेरे पुराने वीडियोस पे कीजिए, बिकॉज मेरा कमेंट सेक्शन डिसेबल्ड है. बिकॉज मैं माइनस सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल एक्सपर्ट. सबको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.